265 films for children to make sure that there is a vibrant film culture for children in our country. So CFSI has produced GGBB, Gopi Gavaiya Bhaga Bajaiya, which is being marketed and released by Karidi Tales. I'm very happy that Vishwanath, the CEO of Karidi Tales, also is here. And of course, what can I say? We have in our midst, I really do not know, sir, how to express my gratitude, Gulzar Saab. Gulzar Saab has been an integral part of the Karidi Tales journey, for last 22 years now. He has written several audiobooks for us. He has not only written, he has also voiced and narrated these stories called Karidi Katha. We have done an album called Bandar Bindas Bandar, which featured singers from and musicians from over 3 generations, including Manna De Saab, right to Udit Narayan and Aditya Narayan and Shankar Mahadevan and the entire galaxy of singers, and Gulzar Saab had helmed that project. And we also worked very closely with the autobiography of APJ Abdul Kalam, just called Parvaz. So Gulzar Saab has been an integral part of our journey, and I'm so happy that he's here today. A little later on, Shilpa would explain how he has been the seed for the very film that we are launching today. But that's a little bit for later. I would like Rajesh Goyalji sir and Vishwanath to honor Gulzar Saab. Everyone, I'm really excited to be here, and it's a great honor that Gulzar Saab is here to launch our trailer. This film is a labor of love, and well, it takes pretty long to make an animation film, but we've gone through the whole process, and a lot of the people who are very closely involved are here today with us, and we'll probably introduce them to you a bit later once you've seen the trailer. But the whole journey really started with my interest in doing children's books. I've also been associated with Karidi Tales. I've done a few books for them. I love doing children's book illustration. And during my time as an illustrator, I got this amazing book from Scholastic to illustrate. And this book was Gopi Gayan Bhaga Bhain. And this was retold by none other than Gulzarji. And I was so excited when I got the text, because this is a film that I've grown up watching, and it's really close to my heart, as it is, I think, to most of us, especially in Bengal, probably. But anyone who's even remotely interested in film and storytelling knows the film, knows the story, and it's been very close to everybody. So I got this amazing text and I was like jumping, but then I also got really intimidated. I said, what am I going to do with Gopi Gayan Bhaga Bhain, which hasn't been done before, which can be, taking what's already, all the amazing things done before, can it take it a bit ahead? And while I was illustrating the book, there was this little idea that popped into my head saying, thinking, because I was asked to do probably about 20 drawings for the book, and I ended up doing 50 or more. And it was only because the storytelling was so engaging, and I got totally carried away, and I said, if I can make 50, I'm sure I can make 100, I can make 200, I can make 1,000, and probably 500 drawings for this book. And why don't I make a little animated film for children? And that's where, the seed of the idea, as Narayan had pointed out, that's where it came from. Of course, we've based it on the original. The original is a very old story, 1915, but it's a classic. And the fun of the story is that there are many possibilities for the retelling of this story. It allows for that, and that's what we've done. We've had a lot of fun with it, but it's also a great tribute to all the amazing people who've been involved with the original story. I'll stop here. You can and start, ask. Yeah, we'll just remove the backdrop. Yes.
can we go ahead, sir, with the trailer? The launch of the trailer. You can just give the green signal. ये क्या करना है आप बताते रहेंगे। सबसे पहले तो मैंने आके एसी कम करवाया, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ शॉल मिलने वाली है, वो काम वहाँ कम करवाया, वो चलता रहा बेशक। मैं बल्कि जिक्र किया मैंने कि इतना तेज एसी वहाँ रखा जाता है जहाँ शॉल वॉल मिला करती है। आई डिडंट नो आई एम गोइंग टू गेट वन। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी जिन्होंने ये सारा अरेंज किया, जिनकी वजह से ये फिल्म बन सकी। I've been a part of Children Film Society also at one time, and I've been a part of the Karadi family. And I know for all those years enjoyed with Narayan and Vishwanath. करते करते साथ किताबें करते रहे, उनके साथ म्यूजिक करते रहे, और फाइनली पता नहीं मुझे क्यों क्लास से बाहर खड़ा कर दिया इन लोगों ने, and they are carrying on still with their work. But a big work is being done, and it's a matter of responsibility बच्चों के लिए काम करना इस तरह से। और मैं अभी रास्ते में बात कर रहा था विश्वनाथ जी से कि it's not आप इम्पोज करने वाली बात नहीं है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है that you must work for children because they are the future of our country. Those are just words and sentences left. Nobody is really working in that way. वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं हमारी आने वाली नस्लें, वो पॉलिटिक्स ही में ठीक लगता है, पॉलिटिक्स ही में वो यूज़ किया जाता है। और लेकिन ये it is done instinctively, it is done emotionally, it's done how you feel about the children and how do you see the culture of this land, which is centuries old, and how you want to pass it on to them, कि हमारे बाद पता नहीं रहे नहीं रहे, how to carry it forward. And imagine कि this family, this is a Ray family, Satyajit Ray family, because people know this family from Satyajit Ray, but this is done by his grandfather, Upendra Kishore Ray Chaudhary, जिनकी ओरिजिनल कहानी है, and he handed over to his family, and his family has handed over now, I can say, to me, and I have handed over to the next generation, and that is Narayan and Shilpa. I'm a great fan of Shilpa. She was, I'm sure she remembers, I used to call her and ask when I used to do those characters, because I was taken aback with the style. With the style and the way she would carve a character out of these lines. Illustration, I think the best illustrator that I have ever seen or met in my life. Yeah. And I'm sure she remembers it. Absolutely. That when she was doing it in Scholastic, I said, I'm giving this book only if Shilpa is doing the illustration. And finally, another book in Scholastic. The lady who was looking after it, I won't name her, she knows her. She left Scholastics and joined HarperCollins, and I said, give my book back to me because I don't want it to be illustrated by anybody else. And she came all the way to Bombay and asked me, no, I can't help it with HarperCollins. They have given me a chance, I want to do that. And I wish that book had fallen in her hands to do the illustration, which is Samay Ka Khatola. That was the exact book. And now I'll have to keep following her wherever she is, and if she comes to Karadi Tales, I will give my books to Karadi Tales to do it again. And I'm talking straight from my heart. This is how I feel, and this is how I feel we should work for. With that kind of intimacy, with that kind of emotion, with that kind of instinct, we should work like a family for children, and only then I think we can keep this wave of our culture passing on and going on, and that's being an Indian, that's being a true Indian. Thank you so much. So I'd love for everyone to please see our trailer
And can we have it, please? Just give me one. Yeah. और रियली गुड टू सी यू। और बहुत दिनों के बाद जब आप इस तरह का ट्रेलर देखते हैं और साथ में ये उम्मीद भी जगती है कि ये फिल्म चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की लाइब्रेरी में नहीं रह जाएगी। अमूमन बहुत सी फिल्में वहाँ हैं जो बहुत से बच्चों ने नहीं देखी होगी क्योंकि वो थिएटर तक पहुँची ही नहीं। आप हमेशा से इस तरह की फिल्मों के साथ जुड़े रहे हैं, खास करके रिलीज़ को लेकर कि थिएटर तक पहुँचे, जो बच्चे देख सके, क्योंकि जिनके लिए बन रही है उन तक पहुँचनी भी चाहिए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी सही शुरुआत मानते हैं आफ्टर अ लॉन्ग गैप एक फिल्म जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से आ रही है और थिएटर तक पहुँच रही है? मेरा सवाल ये है क्या आपको लगता है और ज़्यादा फिल्में आनी चाहिए? बहुत कम फिल्में आती हैं बच्चों को लेकर। जब मैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की बात करता हूँ वहाँ पे भी बहुत सी फिल्में हैं, जैसे जिक्र किया गया कि 500 फिल्में हैं, मैं भी मानता हूँ 500 फिल्में हैं, लेकिन बहुत कम फिल्में हैं जो थिएटर तक पहुँची। और मुझे ये लगता है कि नहीं, बड़ा आपने सवाल जो पूछा है, मुझे तो तब से लगता है जब मैं उस उम्र में था कि फिल्में क्यों नहीं बन रही हैं। मेरे लिए बनेंगी बड़े होने के बाद तो बाद की बात है। जब मैं बच्चा था मैं तो तब से कह रहा हूँ कि क्यों नहीं बन रहे। लेकिन जाहिर है कि ये फिल्में नहीं बनी है और सिनेमा हमारा कमर्शियल लोगों के हाथ में था। इसी वजह से चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना हुई या वो बनाया गया। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में जिस वक्त हम काम कर रहे थे और कई साल काम किया है वहाँ पे भी मुश्किल ये थी कि हमें थिएटर्स नहीं मिलते थे और थिएटर वालों ने भी कोई मदद नहीं की क्योंकि वो अगेन प्राइवेट और ऐसे कोई इस तरह के थिएटर भी नहीं थे कि जहाँ बच्चों को खास तौर पर इन्वाइट किया जाए या बुलाया जाए या बच्चे पेरेंट्स के साथ आके देख सकें। मुझे इतना याद है, एक एरोस नाम का थिएटर है जिसे ब्रिटानिया बिस्किट जो प्रोग्राम किया करते थे और बस वो एक संडे भी मॉर्निंग शो एक हुआ करता था लेकिन ज़्यादातर संडे। एंड दिस इज हाउ इट वाज ट्रीटेड इन द चिल्ड्रन सिनेमा। Children Film Society also have never been able to work it out all these years in spite of half a century gone, more than half a century. Children Film Society has never been able to become independent cinema body, which if I may have the permission to say so, it is only during one period of Jaya, Jaya Bhaduri Wadi, that she made it feasible and got the time on the television, the morning time for children, every day, Sunday, special time for children, and Children Film Society had almost become independent money-wise. And subsidy लेने से इनकार किया हो कभी Children Film Society ने, I think that's the only time which I remember it had happened. One Mr. T. Narasimhan, he was the man who managed the entire business. He was a businessman. The moment there was a businessman and there was a professional people in it, it had started working hardly for 1 or 2 years or 3 years and again grabbed away by the commercial setup of our cinema in the society by the businessman. It was taken away once again and it never happened once again with this. I think it needs some different sort of setup and a planner and differently commercially planned that Children Film Society should work for it. Otherwise, this is only filling up the, I think, eyewash by the government. Government has to show that हम कर रहे हैं. And most of the adventurists came in, जिन्हें हाथ साफ करना था, जो इंस्टीट्यूट से निकलते थे, कहते थे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में चलते हैं ना यार, जरा हाथ साफ हो. And I have heard all this. I am on an age now that I can say it without getting the कि आप पत्थर मारे उससे पहले मैं अब कह सकता हूँ इसलिए. And if you look into it, now why blame cinema only for children? What have we done for children? Children literature का क्या है?
children books के, except that I admire the Karadi Tale family, the way they have carried it on in spite of all the handicaps. जिस तरह से विश्वनाथ जी को मैं जानता हूँ कि जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल किए है और जिस तरह से ये लड़ते रहे हैं कि मुझे अपना फील्ड नहीं छोड़ना है, मुझे अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, मुझे बच्चों के लिए काम करना है, एजुकेशन का काम करना है, बच्चों के एजुकेशन का काम करना है। कई स्ट्रगल से निकले, किस तरह की स्ट्रगल से निकले हैं, इनके राइट्स ले लिए गए, छीन लिए गए, फिर वापस लिए उन्होंने, और इस तरह से ही हैज बीन कैरिंग ऑन। हैट्स ऑफ टू पीपल एंड फैमिली लाइक दैट who have worked out for children. It's a commitment with self. It's a commitment, it's a moral or moral कहो या क्या, it's a commitment with yourself. इसके लिए कोई हिसाब किताब लगाने से कुछ नहीं होगा. And I think somewhere we miss this, which is not happening. Cinema, literature, and then come look at things which are happening in the society. Which kind of respect are you giving to children? Which kind of love are you giving to children? उनकी एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं हम, क्या किया? I mean, come to think of it, it's a commitment, moral, soul, जो भी कहिए वो है, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, एज ए नेशन नहीं कर रहे हैं, उसमें किसी एक सोसाइटी नहीं। I'm sorry, I've spoken more than what you asked for, but it all involves to this, and it comes to the same reason, कि why there is no cinema, why there is no literature for children, and why there is no music for children, and why don't we have time on television for children? Why can't you use it for that? And that also is not happening. Nothing is being produced here. या तो कोई डब किया हुआ बाहर से सीरियल आ जाते हैं, या वहाँ से अडेप्टेड आ जाते हैं, जिन्हें हम हिंदी कर देते हैं. And that's all what is happening. शुक्रिया सर, वी ऑलवेज लव टू हियर यू. जो भी आप कहते हैं बहुत कानों को सुकून देता है. Have spoken too much. नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आपको. माफी चाहता हूँ. नहीं सर, बहुत अच्छा लगा. कानों में खराश लगी हो. नहीं, रसगुल्ला रस. शिल्पा और विश्वनाथ, आप दोनों से जानना चाहूँगा, जैसे गुलजार साहब ने सब बताया और हम सब भी जानते हैं, इतने और फिल्म फेयर सोसाइटी का भी, प्लीज डोंट टेक इट ऑन अ नेगेटिव नोट सर, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट इट इज, एक बहुत मुख्तलिफ सा बजट होता है कि इतना हम आपको दे पाएंगे, इतना आप खर्चा कर सकते हो. और इस तरह की फिल्म बनाना जहाँ बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत वक्त इन्वॉल्व है, कैसे मैनेज किया? ये आपका जुनून था बच्चों के लिए, फिल्में उन्हें बनानी है, जैसे गुलजार साहब ने अभी जिक्र की. शिल्पा एंड विश्वनाथ बोथ. मुझे पहले से लगता था कि हमारे यहाँ बहुत कम इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं चिल्ड्रन के लिए. जो अभी बताया गया कि जो भी आपको दिखता है टेलीविज़न पे यूजुअली डब्ड रीटेलिंग्स होते हैं फॉरेन सीरियल्स या फॉरेन फिल्म्स के. तो हमारा जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है तो इतना स्ट्रॉन्ग है. तो आई ऑलवेज वंडर्ड कि हम क्यों नहीं अपने स्टोरीज बता रहे हैं इन आवर ओन वे विद आवर ओन सेंसिबिलिटीज़ और अपने बच्चों के लिए. तो दैट इज़ व्हाट वाज द ट्रिगर टू मेक दिस फिल्म. और मेरा पूरा काम इसी एरिया में रहा है कि टू sort of do and discover things that are around us which are pertinent to our culture, और अपने टाइप का स्टोरी टेलिंग अपने बच्चों के लिए है. और ऑफ कोर्स हाँ, ये बहुत एक लेबर इंटेंसिव काम है एनिमेशन करना, और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग उसको बैक करते हैं. बहुत कम फंडिंग है इसके लिए, तो जो भी है बहुत लिमिटेड फंडिंग है, पर उसी में कुछ अच्छा बन सकता है. यू नो, वो भी हमें एक प्रूव करना था इस फिल्म के थ्रू. और जो भी इस फिल्म में इन्वॉल्व्ड है उन्होंने पूरा स्ट्रेंथ उसमें डाला है, डिस्पाइट नोइंग कि हाँ इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, इसमें पैसे कम है, या यू नो इट्स टफ इन द सर्कमस्टेंसेस, ये रिलीज़ भी करना मुश्किल ही है. तो इन सब डिसएडवांटेजेस को लेके फिर भी सब ने यू नो वी पुट आवर माइट बिहाइंड इट, क्योंकि वी आर वेरी कन्विंस्ड कि ये अच्छा प्रोडक्ट है बच्चों के लिए या जनरल ऑडियंस के लिए. और यू नो इट्स ऑल्सो टू प्रूव कि हमारे यहाँ ये सब हो सकता है. वी डोंट ऑलवेज हैव टू डिपेंड ऑन यू नो आउटसोर्सिंग आवर स्टोरी टेलिंग और जस्ट बोरोइंग फ्रॉम द वेस्ट. And we have enough resources here in terms of manpower, in terms of our intellectual content. Even if we don't have
too many financial resources, we still do have a lot of other strength. तो ये of course ये तो prove करना था, पर ये viable भी होना चाहिए, वो तो बहुत important है, नहीं तो ये आगे कैसी फिल्म बनाएंगे, you know, next film कैसे बना सकते हैं. तो of course these are questions that everyone should think about, और ये बहुत important है कि हम हमारे बच्चों के लिए कुछ बच्चों के लिए कंटेंट बनाएं, या you know indigenous content अपने लोगों के लिए बनाएं, because we have so many strengths, अपने stories इतने हैं, इतने vibrant है, अपना visual culture इतना vibrant है, उसको लेके कुछ बनाना चाहिए, you know, so that we take ownership of our own content. विश्वनाथ जी सर, आप if you can say something about. मैं एक छोटा सा सवाल बीच में पूछ रहा हूँ, फंड्स क्यों कम है? वेरी ट्रू. क्या फ्रॉक बनाना है कि इसमें कम कपड़ा लगेगा? फिल्म का तो उतना ही खर्चा आएगा, म्यूजिक का उतना ही आएगा. Why funds are less? Who should be responsible? Yeah. Good question, Gulzar sir. Yeah. फिल्म का उतना ही, फिल्म तो उतनी ही लगेगी ना. Sir, since last 2 to 3 years, the government has increased the funding for the films also. अभी जो हमारी फिल्म बन करके आई है, it is all not less than 3 crore. और एक फिल्म जो अभी सेंसर में है is 3.5 crore. So अब कोई फंडिंग का इशू नहीं है. ईयर हम साल में 3 फिल्म बनाते हैं on an average. So as far as current scenario है, there is no issue as far as funding is concerned. So we have allocation of 10 crore a year, जिसमें 1 करोड़ जो है नॉर्थ ईस्ट के फिल्म के लिए भी बनाई जा रही है, और 9 करोड़ के लिए हम अदर देन नॉर्थ ईस्ट के हिंदी एज वेल एज अदर रीजनल लैंग्वेज के लिए. So catering to 3 films a year. And if I can add something to Gulzar साहब, as you said earlier ना, कि बच्चों की फिल्में क्यों नहीं आ रही, बंद तो जाती है, फिर उसके बाद थिएटर तक क्यों नहीं पहुंच रही है. I would like to add something to that, कि हमने अभी first of all my heartfelt congratulations to the Karadi Tales for taking up this project, कि बच्ची को फिल्म को हम बना तो प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, लेकिन थिएटर पहुंचाने के लिए we need support, because हमारे पास वो बैंडविड्थ नहीं है रिलीज़ करने के लिए. एज यू नो, रिलीज़ करने का इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रपोजिशन. तो ये तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉड्यूल से ही हो सकता है, नो, व्हेन बोथ द हैंड्स प्रोड्यूसर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर कम टुगेदर एंड गिव अ रिलीज प्लेटफॉर्म, तो हम बच्चों तक जा सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ थिएटर्स. साल भर में हम लोग 20 लाख बच्चों को तकरीबन कवर करते हैं, जो हमारे लाइब्रेरी में है, जो गोल्डन ट्रेजर हमारे पास है, 265 प्लस फिल्म्स इन अबाउट 25 लैंग्वेजेस. तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिखाते हैं, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दी अर्बन एरियाज. बीइंग अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद अ सोशल ऑब्जेक्टिव्स, हमें रूरल एरियाज़ में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ उन बच्चों के पास कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है. कहीं तो जगहों पे तो थिएटर भी नहीं है. तो उसके लिए हम लोग NGOs के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू नॉन थिएट्रिकल शोज़ करते हैं, LCD प्रोजेक्टर पे शोज़ करते हैं, एंड दैट हाउ वी कवर अबाउट 20 to 22 लाख चिल्ड्रन अ ईयर. तो ये जो मॉड्यूल है रिलीज़ का बच्चों तक, आई एग्री विथ यू दैट फिल्म बनने के बाद लाइब्रेरी में ना रहते हुए हर एक बच्चों को पहुंचनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए बच्चों का. आई विल जस्ट ऐड समथिंग टू दैट. अभी हमारी और 2 फिल्में हैं जो रिलीज़ हमने की हैं. एक तो है पहुना, जो सिक्किमीज़ लैंग्वेज में सिक्किम में रिलीज़ हुई थी 7 दिसंबर को. दिस इज़ द सेकेंड वन, एंड थर्ड वन इज़ ऑल्सो ऑलरेडी बीइंग प्लान्ड इन द नियर फ्यूचर, इज़ फिल्म टेनिस बडीज़. I'll add something to that also. One more film called School Chalega is also being planned for release in the near future. So we have geared up for, to really reach out to the children and increase our outreach, to the maximum level possible. So let me add a little bit here. See, the question सिर्फ movies के बारे में नहीं है. Generally, when what Gulzar Saab is content for children itself,
as a society, we have just not given it the level of importance. We have not taken it responsibly enough. That we dedicate ourselves to creating beautiful children's content using the best possible resources available. In '93, when I and my family and even Narayan returned from the US, one of the big things that we found was when I go to a bookstore, all the really beautifully written books, beautifully illustrated books were all of foreign origin. And those which were available made in India were made with clearly a certain amount of love, but the resources behind it was very, very minimal. So the quality of the creative quality, production quality, both of them were very little. And that is how Karadi Tales actually started. Ki hamare bachon ke liye, my 5-year-old son does not have beautiful books which are based on Indian culture, Indian aesthetics. So Karadi Tales started there. And at that time, इतना कहूँगा कि हमें पता नहीं था कि कितना difficult ये business है. We presume कि publishing हो जाएगा, 5,000 copy बिकेंगे, 10,000 copy बिकेंगे. It is not as straightforward as that. But we have kind of continued our journey saying that I wouldn't even say this is responsibility, simply the fact that we love doing these things. We love, in Karadi Tales, we've had the, of course, Gulzar Saab has been a big part of it, but right from the beginning, we've had people like Nasiruddin Shah, Girish Karnad, Saeed Jafri, Nandita Das, Usha Uthup, a whole lot of people who have actually supported the process of creation. With GGBB specifically, I think that jitna bhi main kahun wo kam hai. Narayan has basically taken it on like a life's mission ki this beautiful product which has been seen in small groups must be seen in a larger way. And I will use this opportunity to say कि आप questions पूछ रहे हो children's content के बारे में, but you have to support it by giving us a lot of coverage in the media, saying that something really beautiful has been created. Let us get the message across to as many children, as many parents as possible, and hopefully we need a few commercial successes at the end of the day. Animation, India, movie release. The word animation itself means that your collection is going to be a small fraction. Abhi animation ke upar aap dalo children's film, the two things put together are discounting to such an extent that it becomes very difficult to viably release films in this kind of environment. So, that's why we are calling this film India's first children's film for adults. And I have to say this, taking on from, Madan Gonzalez. What Rajesh ji said is that I really feel that, though sir, your question is very valid, that I could not have thought of any other organization other than CFSI which would have made a film like GGBB. I mean, let's think about it. I think I mentioned Soumitra and Jajantram Amantram. I really don't remember any other, successful, really box office. Jajantram Amantram in its time was a huge box office success. But after that, there has been no children's film that has actually become a mainstream film. So, as he very rightly said, there has to be a government and private partnership. Rajesh ji? Yeah, so, it is not just, pointing a finger at CFSI. I have had a very wonderful time, working with them and synergizing with them to make sure this happens. Thank you. You want to add something? And I have a question. आगे चलने वाले हैं जिनकी तरफ हम देखते हैं, जिनकी उंगली पकड़ के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उनमें शिल्पा है और मैं मेघना है और मैं विशाल है. तो वो लोग हैं जो बना रहे हैं इस तरह की फिल्में और अच्छी फिल्में बना रहे हैं. विशाल ने नीचे ही रखो ना फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो. एंड आज के टॉपिक्स पर मेघना हैज ऑल्सो मेड अ फिल्म. एंड आज के बच्चों के लिए ये देखिए जो शिल्पा ने फिल्म बनाई, अब उनकी बारी है. एंड let me sit back, they are making films which are better than me cinematically. I might have brought some thoughts earlier, but my films are not so cinematic and so good as these films are now, which are being made by this generation. I think they are much ahead of me. I can't pace up that fast and I can't do it. But I'm doing my role through the books and writing for children, which continues with me and which I'm still doing it, carrying it on. जो मैं चाहता हूँ कि अपने वक्त का, जैसे अभी बात कर रहे थे हम, कि सोचिए ये कहानी 1915 में लिखी गई, 103 साल गुजर चुके हैं. It has come down, है ना? तो वो
कल्चर, वो सभ्यता, वो जो हमारे देश का है और हमारे रहन सहन का है, वो जहाँ से जो बह रहा है मुझे उसको बहाते रहना, आप तक पहुँचाना है। वो आप उठाइए, आप आगे चलाइए उसको, क्योंकि मेरी बारी तो ख़त्म हुई उसमें। और मुझे फिल्मों में आने की ज़रूरत नहीं, वो किताबें भी चाहिए बच्चों के लिए, सिर्फ फिल्में ही थोड़ा ही हैं। फिल्म इज़ नॉट द ओनली मीडियम टू वर्क फॉर चिल्ड्रन। देयर आर सो मेनी अदर मीडियम्स एंड ऑल हैव टू बी लुक्ड आफ्टर। I think animation is once again a very, very big medium. You can make really wonderful films and meaningful films and entertaining films through animation. I just want to add that this is the 50th year of the release of Gopika in Bhagapine. So it is it just happened coincidentally. So 103-year-old story. 50 years ago, the Satyajit Ray's first movie version came, and now there's GGBB. Please support it. Yeah, its own role in its own time. And, you know, CFSI had mentioned that the biggest challenge is in taking it to the theatres. So Karidi Tales, and we have a phenomenal team. All of you, we need your support. We have Luminosity. Can I introduce Rahul? Rahul of Luminosity Pictures, who is handling the marketing and marketing and distribution of this film with Runaway Luminosity. Thank you so much, Rahul, for taking this film. And I think March 1st, the best answer to all the questions asked here would be if we all go and see the film and get, you know, another 1,000 people, you know, along with us to see the people. Thank you so much. Can we play this song after this, after the picture? You want to listen to a song from the film?